In the name of Allah, the most merciful, most gracious and most beneficent. Prophet Muhammad said, peace and blessings of Allah be upon him. Recite Quran in a good voice. Now, today I will deliver another lecture for class 11th, unit cell biology. And today's topic is cilium or flagellum. यानी कि cilia or flagella. Cilium go singular, तो cilia go plural. लेकिन flagellum go singular, तो flagella go plural. तो वही सवाल, ये cilium तो flagellum या cilia flagella क्या शासन? यम च filamentous-cylindrical structures आसन on the surface of cells. Cilia and flagella are filamentous cylindrical structures present on the surface of cells. Okay. यम छ सेल पेट कन आसान cilia तो flagella the yim ch cylindrical structures आसान या on the surface of cells. Yes, they are called cilia and flagella. तो वन सवाल यस cilia flagella छ गडे वछो अमिज डिस्कवरी cilia flagella flagella were discovered by Engelmann was a scientist em ch flagella starters discover करमित त तम पछ ब्याक scientist Jensen तमिस वना तम वश तम च करमत स्टडी तम च करमत डिस्कवर sperm flagella in a flagella of sperm. Jensen discovered flagella of sperm. Flagella of sperm. Hodge Berg scientist. Hodge gave detailed structure of flagella of sperm. In sperm flagella is a detailed structure that Hodge. The Berg scientist was Menton was his now. Menton studied cilia of plants. Menton scientist Berg cilia study kormut plant. Okay. So this is discovery. And but which is occurrence? Im common mulch asan im cilia flagella. Cilia flagella choshne mit im ch ya say plant cell must asan animal cell must asan. Wango im ch asan zyada paham lower plant and lower animal must. Cilia and flagella are most common in lower plants and lower animals. Lower plant and lower animal must zyada paham asan and less common in higher plants and higher animals. Less common in higher plants and higher animals. In a higher plant and higher animal must you come asan. The man must asan, magar kam chasan. The lower plant and the lower animal must him sad pahmasan in cilia flagella. The flagella even prokaryotic cell must the love flagella are also reported in prokaryotic cells. In prokaryotic cell must asan flagella. Okay. So this is occurrence. Now let us take origin.
origin. Yim cilia flagella yim kam per gay originate. Yim originate gimmick cytoplasm manzai. They have cytoplasmic origin from basal bodies. Okay. मैं उन तक बात करें. Suppose ये cell या cell में चासन nucleus nucleus पेट कहीं चासन centrioles. तो तिम्मी पेट च गमी develop यम cilia flagella. Okay. मैं लिहाजा करें यमन च origin क्या cytoplasmic origin यम च गम्स basal bodies of पेट originate. As I told you already, suppose this is nucleus. Yes, nucleus is पेट कहीं चासन centrioles. Timi centriole pet yum cilia flagella develop. Gimi liha kire chuma cytoplasmic origin. Tim pat never nearan. Yim cell never nearan. The yani yim yasa ye origin chum gumu cytoplasm. Magar chima asan present on the surface of cell. The meon yaw is any centriole chu yam pet yum originate gimi chum cilia flagella. Timan pat special now basal bodies. वो यावन was basal body, the यावन was centriole ते है कौन से centrioles. Okay. So this is origin. आज पर वचो shape क्या शमा cilia शासन hair like the flagella शासन whip like शमास. You can also differentiate cilia and flagella. Cilia yaman asan yam hair like asan, flagella whip like asan. That part of size shman asan. Cilia 5 to 10 microns long asan. The flagella, cilia 5 to 10 micron long asan. The flagella yam asan 150 microns long. 150 microns. Shim long asan, come flagella. Okay. वो cilia लकट आसन, flagella zit आसन. अच्छा. तो go shape, size, the big one number. इनका cilia आसन, cilia 1000 मंज आसन. Cilia आसन in thousands. वस्तु च एमित cilia आसन. Yim asan 300 to 14,000 per cell. Earth ranges man shim asan. Yim flagella shmay asan. Flagella hakan asit 1 or 2, maximum 8, maximum shim 8 asan. Okay. Wo cilia flagella inanchi cilia asan 1000 man ekis cell. 3 per toda 100 asan ekis cell. Earth ranges man yawan. The flagella asan ya z. Tim asan maximum 8 flagella. Okay. The white position. You know cilia asan. Cilia. Think throughout the cell asan. Cilia are located throughout cell. Throughout the surface of cell. Imdan flagella asan, while flagella are located at one end of cell. Okay. Cilia asan throughout the cell surface, as you have seen paramecium, the topper and cilia asan. The flagella asan cilia exi andas. Iki side asan flagella. Okay. So this is position. And but choice chemical composition. Chemical composition क्या है cilia flagellas? Asman carbohydrate asan. Asman proteins asan. Asman lipids asan. Enzymes asan. Nucleic acids asan. Nucleic acids asan. DNA asan.
RNA आसान enzymes आसान ATPase छ enzyme छ आसान ओके तो यम छ अथ मज आसान प्रोटीन छ अथ मज आसान अथ मज डाइनिन प्रोटीन आसान डाइनिन प्रोटीन अथ मज निक्सिन प्रोटीन आसान निक्सिन प्रोटीन कैंसन मज एक्टिन ते आसान एक्टिन प्रोटीन ओके यानी इमन मज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन छ लिपिड छ एंजाइम्स छ न्यूक्लिक एसिड्स छ DNA RNA न्यूक्लिक एसिड मज आसान ATPase छ एंजाइम मज आसान प्रोटीन मज छ आसान डाइनिन प्रोटीन Nixin protein, Nixin, NEXI, actin protein. So this is chemical composition of cilia or flagella. I put what was amok ultra structure. Ultra structure. You see cilia the flagella cho. You see man ultra structure cho shno so shaman same. Okay. No doubt they have some minor differences. मगर इस general structure शिमन so शिमन same. तो वही सवाल ये discussion च ultra structure cilia मुक तो flagella मुक अच्छे गोड़ा इस membrane यवन ऐत आगो outer membrane बेआगो inner membrane. Cilia and flagella are bounded by two membranes. Of 90 to 100, 110, 10 angstroms, just a total thickness. Now, must be the angstroms total thickness as an yes, I membrane. So you see membrane cho donway membrane, iman darmiyan yes space chasan. Is space chasan 30 angstroms. The space between the two membranes is 30 angstroms. 30 angstrom chasan space between the two membranes. Okay. I put what was under kind kya यह सा ये cilia मस तो flagella मस आसान इसलिए अंदर इस तरह वन नजर इसन एमे के सोरी ग्राउंड सबस्टेंस अंदर छ आसान आचे सर से वन मैट्रिक्स the ground substance is called matrix वही सवाल इसे मैट्रिक्स में आसान At matrixes मज क्या आसान यसी मेम्ब्रेन अंदर किन चीज ये वन सरसै जनाब बन जन कोर अमुक आसान कोर तो अत स्पेशल नाव वन एक्सोनियम या एक्शल कॉम्प्लेक्स the core of cilia and flagella is called axonium या एक्शल complex अच्छा ना axonium या वाला एक्शल complex ओके यानी इसे basically जो मैं उन ताई वही सेल मस गुमत originate इसे extra cellular आसान सेल नीले आसान मुझे सवाल ये एक्सोनियम का मुख्यासन बनी मुझ अथमस क्या शासन एक्सोनियम is made up of bundle of microtubules एक्सोनियमस मज क्या आसन अथमस आसन bundles of microtubules these are microtubules इमने मुख्यासन बनी मुझ एक्सोनियम ओके वही सवाल अथमन से द्विकस्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स अथमन आसान द्विकस्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स आख आसान अथमन डबलेट्स एंड सिंगलेट्स अथमन डबलेट्स सिंगलेट्स आसान वही सवाल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल क्या गई डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल गई इनसे जज माइक्रोट्यूब्यूल्स आसान
doublets, each doublet, या अथवा गोड़े अथवा कत doublet अथवा doublet नौ doublets are 9 in number यम नौ okay यम नौ यम doublet तो यह गई यम नौ यम ब्लू कलर की यम नौ doublet वही सो अकिस डबलेटस मज क्या अकिस डबलेटस मज ज माइक्रोट्यूब्यूल ईच doublet consists of 2 microtubules या मुझ पर ब्याह नाव सब फाइबर्स अच्छा अकिस डबलेटस मज ज माइक्रोट्यूब्यूल तमिच वन डबलेट ओके तो यम माइक्रोट्यूब्यूल ए बी माइक्रोट्यूब्यूल बी सपोज यह माइक्रोट्यूब्यूल ए यह माइक्रोट्यूब्यूल बी यह गो ए तो यह गो बी इस माइक्रोट्यूब्यूल ए यह कंप्लीटली राउंडेड यह बिल्कुल राउंडेड तो अत मे बराबर 13 प्रोटोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल ए tubule A is completely rounded. Microtubule A is completely rounded asman barabar 13 protofilaments having 13 protofilaments. As I told you already, each microtubule is made up of 13 protofilaments. कोई बराबर तमी राउंडेड अत मे बराबर 13 protofilaments यह बी सी शेपड यह सी यमिच वाल योर शेयर कर अत मे बराबर protofilaments अत मे 10 protofilaments अत लिखो माइक्रोट्यूब्यूल बी माइक्रोट्यूब्यूल बी is C-shaped. It is C-shaped sharing the wall of A. It is H wall your share karan. It is C yet kari yemich wall share karan. Lehna atmas khali kaz 10 protofilaments. So microtubule B has only 10 protofilaments. Have you understood? Go doublet using chasan. Ichasan baniyomut. Don microtubulan hon. Ago microtubule A, bago microtubule B. Yachasan sersi doublet. तो microtubule A is completely rounded. तो microtubule B is C-shaped तो यह C-shaped यह शेयर करन wall of A तमिच 10 प्रोटोफिलामेंट होच बराबर 13 प्रोटोफिलामेंट्स तो यम 9 डबलेट वो सवाल यह माइक्रोट्यूब्यूल A माइक्रोट्यूब्यूल A दिवान आर्म्स माइक्रोट्यूब्यूल A bears arms. arms. अच्छा arm आ गए outer arm बे आ गए inner arm. अच्छा arm ये क्या हमें हम red color से आ गए outer arm भी गए inner arm सब गए outer arm यह फन हुआ इस आ गए inner arm अच्छा arm Yes, outer arm hook shaped, inner arm straight. Outer arm hook shaped, inner arm straight. Inner arm straight, outer arm hook shaped. So, yemni arm special protein that is called dynein. Arms.
contain a protein called dynein. Ats manch dynein protein asan, dynein protein. Armon manch asan dynein protein. Okay. Very clear. तो मुझे सवाल इमन माइक्रोट्यूबुलन कुछ कनेक्ट करन इमन माइक्रोट्यूबुलन दरमियान छ आसान लिंकर तिमन छ वनान BA linkers BA linkers मो अकन छ आसान BS कोन BS छ आसान AS कोन सपोज ये A तो ये B सपोज वे मानो ये लिंकर या छ माइक्रोट्यूबुल A योर छ माइक्रोट्यूबुल B सो वो BA लिंकर microtubules doublets are connected by BA linkers connect kar okay BA linkers they connect doublets तो बहरहाल यम गई doublets वो दिमो अंदर क्या आसान आसान मंजस अख सेंट्रल शीथ सेंट्रल शीथ इसके सेंट्रियोलस ते आसान मगर सेंट्रल शीथस मंच आसान ज सिंगलेट यमन छ सिंगलेट्स तो यम छ मन ज आसान they also contain a central sheath a central sheath आसान which possess two singlet as much as this singlet asan singlet yim singlet is this asan yimon tish microtubular organization singlet yimon chi ich microtubule yimon baniyomut asan okay tami chis wanan me unya path konti imdas padya eukaryotic cell me unya izan cilia flagella chi eukaryotic cell man asan Niman manch asan 9+2 microtubular organization. Okay. This example is कि cilia flagella मज क्या आसान microtubular organization अथ मज आसान 9+2. अतः देखो इस therefore cilia and flagella of eukaryotic cells. Eukaryotic cells have 9+2 microtubular organization. 9+2 क्या होगा 9 नाम गया इसमें doublets बस गया इसमें singlets अच्छा singlets आसान ये मन जो microtubular organization तो बेशक doublet नाम आसान so ये को 9+2 organization ये चुन प्रोकैरियोटिक सेल मज आसान ये ऑर्गेनाइजेशन की तो यमन सिंगलेटन दरमियान जो अख ब्रिज अख आसान ये छ वनान ब्रिज ये ब्रिज करन काम ये छ कनेक्ट करन काम सिंगलेट यम सिंगलेटस छ आसान यमन छ कनेक्ट करन ब्रिज सिंगलेटस और कनेक्टेड बाय अच्छा ब्रिज आसान ये करन सिंगलेट कनेक्ट ओके तो वह सवाल ये सेंट्रल शीथ छ आसान ये पे वथन स्पोक्स रेडियल स्पोक्स वथन तम बत माइक्रोट्यूबुल एस कुन कनेक्ट कर मगर यम 9 वथन 9 अतः लिखो 9 रेडियल स्पोक्स arise from central sheath and connected with microtubule A. यम microtubule A कोन कनेक्ट आसान करित central sheath पे 9 radial spokes यम रेड कलर खाई में यम के radial spokes जिसके व्हील से स्पोकस है लेकिन मतलब ये स्पोकस यम बत माइक्रोट्यूबुल एस कोन कनेक्ट आसान ओके अतन की थिकनिंग आसान की थिकनिंग ये डेंस मटेरियल थिकनिंग आसान
Okay. This one spoke head one. Spoke head. This one spoke head each other thickening. Okay, I put the 9 spokes. Even 9 spoken pictures and Beaha fibril lock. Secondary fibrillus. Secondary fibrillus. Spokes bear secondary fibrillus. Even pictures secondary fibrillus. Secondary fibrillus. Secondary fibrillus. Okay. So this is all about ultrastructure of cilium or flagellum. Yani using the under your core sorry. Yes, sir, core exonium, axial complex. Yes, must be microtubule organization. Okay. But to have asal point mein using cilia flagella cho yemen cho structure chuman same, no problem. But kya minor differences? Because cilia ch hair like asan. Flagella ch whip like asan. Cilia ch 5 micron long asan. Hum ch 150 microns long asan. Using cilia ch asan 1000 months. The flagella ch asan 1 or 2 या maximum 8 asan. Okay. Cilia ch asan throughout the surface of cell. Flagella ch asan only at one end. Beach point cho using is cilia ch asan. Yim ch yasa ye move gasan in a rowing fashion. The flagella ch gasan yim ch moment karan wave like moment karan wave like motion how. Besh ciliary moment ch quick asan. The flagellar movement is slow asan. Ciliary movement is I mix up quick in sari cilia karan in a coordinated rhythm karan che movement. Flagella ch movement karan independently or freely. That is so slow asan movement. Whole movement ch asan quick tim in a coordinated rhythm karan kya movement. Okay. These are some minor differences between cilia and flagella. The each exam is even difference between cilia and flagella. Short type question even. Okay. So this was my today's lecture about cilia and flagella. So tomorrow we shall take its functions of cilia and flagella, and finally we will move towards last cell organelle, that is called a nucleus. Okay, thank you for this good cooperation.